Dear students, this lesson is about light, reflections, and shadows. We have already read about light, its source, reflections, how it occurs, and now it's time to study what happens when the path of light is obstructed. प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेसन है लाइट रिफ्लेक्शंस और शैडोज, और इस लेसन में हम खास तौर पर शैडोज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जब लाइट ट्रैवल कर रहा होता है लेकिन उसके सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हम जो भी पढ़ेंगे, जैसे कि शैडो का मीनिंग क्या होता है, शैडो कैसे बनते हैं, किस तरह से हम खुद शैडोज बना सकते हैं, ये सारी बातें आज के लेसन में हम देखेंगे। इन टुडेज लेसन we would be learning about the meaning of shadows, the conditions for formation of shadows, and how we ourselves can form shadows. And you are aware that I'm preparing these lessons for you in English so that you are able to develop a habit of listening and understanding the science concepts in English language, as we are supposed to study science in English medium. So when we say shadows, what comes to our mind? What do we think? Let us take the example through few images. We have few objects from a chess. There is a source of light. When we put these objects from the game of chess, we find their shadows on the other side. Similarly, by using our palm and fingers, we can also produce dark images. For example, let us see here. Here we can find the images of birds, of rabbit, of dog. So what is actually happening here? There is a source of light somewhere. In case of this chessboard, source of light is somewhere in the opposite direction to that of the shadows. Similarly, in case of this palm movements, the source of light is somewhere on the bright side of this fingers and palm. So we find that there is a source of light somewhere, maybe near or far. Then the object has to be opaque, means those objects which cannot pass light through them, and then only shadows are formed. जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो हम क्या समझते हैं कि कहीं दूर या नजदीक में एक सोर्स ऑफ लाइट है, चाहे वो टॉर्च लाइट हो सकता है, चाहे वो ट्यूब लाइट हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है या सन हो सकता है, और वो शैडो के ऑपोजिट में होता है। तो एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब ओपेक ऑब्जेक्ट्स को हम लाइट के सामने रख देते हैं तो शैडोज बनते हैं, और इसी आइडिया का इस्तेमाल करके हम अपने पाम से, अपने फिंगर से अलग अलग तरह के शैडोज बना सकते हैं, और उन शैडोज के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, उन शैडोज के अलग अलग शेप हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसा शैडो बनाया गया है जो रैबिट की तरह दिखता है। उसी तरह फिंगर्स का इस्तेमाल करके शैडोज बनाए गए हैं जो डॉग या किसी बर्ड की तरह दिखते हैं। तो बेसिकली we have to remember that in order to produce shadows,
we need to have source of light, opaque objects, and then only shadows can be formed. शैडो फॉर्मेशन में हमें बेसिकली ये याद रखना है कि एक सोर्स ऑफ लाइट होना जरूरी है. जो ऑब्जेक्ट्स का हम शैडो लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं वो ओपेक होने चाहिए और तभी शैडोज बन सकते हैं. तो हम शैडो को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन शैडोज? अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट comes in the path of light. In other words, when objects block light, shadows are formed. So what are the conditions for shadow formation? Shadow formation के लिए किन किन conditions की जरूरत है? अब थोड़ा यहाँ लिखे हुए इन words को हम देख लेते हैं. अगर shadow बनाना है और वहां light rays नहीं है, source of light नहीं है, तो क्या shadow बन सकता है? नहीं. शैडो बनाने के लिए सोर्स ऑफ लाइट का होना जरूरी है. उसी तरह अगर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हमें शैडो मिल पाएगा? नहीं. वी नीड टू हैव ओपेक ऑब्जेक्ट्स. तीसरी बात है, शैडो को देखने के लिए एक स्क्रीन की जरूरत है. चाहे वो अर्थ का सरफेस हो, चाहे वो व्हाइट स्क्रीन हो, एक ऐसा जगह चाहिए जहां पर शैडो बने और उस जगह को हम स्क्रीन कहेंगे. तो conditions for shadow formation includes the presence of a source of light. और वो source of light क्या हो सकता है? sunlight हो सकता है, torch light हो सकता है, bulb हो सकता है. The light rays should be traveling and we need to have opaque objects on the path of the traveling light rays. Then only we can get shadows where? On a screen. So conditions for shadow formation include presence of a source of light, traveling light rays, opaque objects, and a screen. So, which objects generally form shadows? As per our textbook and as per the information found in the internet, we know that opaque objects form clear shadows. You can see here, there is an opaque object and a clear dark shadow has been formed. The translucent objects form shadows, but it is not as clear as that of an opaque object. And as far as transparent objects are concerned, it is considered that a transparent material cannot make any shadow. तो किस तरह के ऑब्जेक्ट शैडो बनाते हैं? ओपेक मटेरियल डार्क शैडोज बनाते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल फेंट शैडोज बनाते हैं और ट्रांसपेरेंट मटेरियल जनरली शैडोज नहीं बनाते हैं, ऐसा माना गया है, ऐसा बताया गया है. सो शैडो का साइज क्या होता है और सनलाइट किस तरह के शैडोज बनाते हैं? बड़े, छोटे, लंबे, किस तरह के बनाते हैं? What is shadow size and how do the movement of sunlight form shadows? Let us look at this picture. In the morning, the sun is at the lowest level. This is number 1 here. Okay. Now the sunlight is falling on this shadow stick. This object shown in the image is called as a shadow stick. When sun is at the lowest, then we find the shadow of the shadow stick is the longest. As the sun is moving overhead, now look at number 2 here. As the sun is moving overhead, the shadow stick is forming a smaller shadow. And as the sun is moving towards the western sky, it is at a lower level, it has again a smaller shadow. But smaller in comparison to the morning, but longer in comparison to midday. So as the movement of the sunlight varies from east to west, from morning to evening, the length of the shadow of a shadow stick also changes. So what do we come to know from this activity? When the sun is lowest in the sky, look at number 1. When the sun is lowest in the sky, it makes the longest shadows. And this happens at the beginning and end of the day. That means during sunrise and during sunset. When the sun is highest in the sky, it makes the shortest shadows. That is in the midday.
हम यहाँ इस इमेज से क्या देखते हैं, ये एक तरह का एक्टिविटी है, आप भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं अपने घर में। ये जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं शैडो स्टिक। सुबह के वक्त जब सन लोअर लेवल में होता है तब शैडो स्टिक एक लंबा सा शैडो बनाता है, एक लॉन्ग शैडो बनाता है। जैसे जैसे सन ओवरहेड होता है मिड डे में, तो शैडो स्टिक एक छोटा सा शैडो बनाता है। और जैसे जैसे सनलाइट मूव करता जाता है, यहाँ सन मूव कर रहा है वेस्टर्न स्काई की तरफ, तब शैडो स्टिक का शैडो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। So the shadow stick has longest shadows during morning and evening, and it has shortest shadow during the midday. फिर बात ये आती है कि क्या शैडोज हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के रियल शेप और साइज के बारे में बताते हैं? Do shadows tell us about the real shape and size of the opaque objects? May or may not. हो सकता है नहीं। जब शैडो को देखकर हमें असली ऑब्जेक्ट के बारे में पता ना चले, तो उस तरह के शैडोज को हम मिसलीडिंग शैडोज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ 3 लोग हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पकड़े हुए हैं, पर शैडो में ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक ओरंगुटान है। यहाँ ये एक एनिमल लग रहा है शैडो में, और यहाँ पर ये एक लड़की लग रही है। तो ये जो ओरंगुटान एनिमल का शेप आ रहा है, ये हमारे लिए मिसलीडिंग शैडो हो गया। ये एनिमल का शेप शैडो हमें नहीं बताता है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। सो सच काइंड ऑफ शैडोज आर कॉल्ड मिसलीडिंग शैडोज। सिमिलरली, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द पाथ ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। इट्स अ ह्यूमन, बट यहाँ पर हमें शैडो में क्या दिखाई दे रहा है? शैडो एक मॉन्स्टर का दिखाई दे रहा है, एक घोस्ट का दिखाई दे रहा है। सो नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू एज योर होमवर्क. There is a image here. You have to identify the shadow. Does the shadow inform about actual shape of the real object? What is the color of the shadow? Then the next question is, can air form a shadow? If no, you have to give reason why. If yes, you have to give reason why again. Some project work for you. You have to take a pencil by using a torchlight in a dark room. Try to form as many shadows of the pencil as possible. Then draw these shadows in an A4 size paper and write name of the shape of these shadows. You have to use a A4 size blank paper. With this, we come to the end of this video lesson. Thank you and have a nice day.